Type 111 in the chat box. वन 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 इन द चैट बॉक्स टाइप कीजिए। मैं तब तक थोड़ा सा स्क्रीन सेट कर लेता हूँ। वाह, यस यस यस, वेलकम बैक। और चलिए 178 वीक में पेनिशा सैटरडे नरिश एंड फ्लरिश में थोड़ा सा हम शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन दिस फोरम एंड व्हाइल टेकिंग दिस प्रोग्राम फॉरवर्ड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित है, मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि कितने लोगों ने कैंगन वाटर का प्रेजेंटेशन देखा हुआ है। प्लीज टाइप 111 इन द चैट बॉक्स। यदि आपने कैंगन वाटर का डेमोन्स्ट्रेशन देखा हुआ है, प्लीज टाइप 111 इन द चैट बॉक्स। दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड क्वेश्चन इन द चैट। सभी लोग थोड़ा सा हाइड्रेशन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग अच्छे हैं और अटेंड भी कर लेते हैं मीटिंग को, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट ये प्रोजेक्ट को समझना बहुत जरूरी है हम सब लोगों को। तो अगर हम लोगों ने कैंगन वाटर का डेमो देखा हुआ है, तो क्या लगता है कैंगन वाटर क्या है? व्हाट इज कैंगन वाटर? आप अनम्यूट करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टाइप एंड एक्सप्लेन आपका वर्जन कैंगन वाटर के बारे में, कैंगन वाटर प्रोजेक्ट के बारे में आपकी राय क्या है? एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर? या धर्मपा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। सॉरी सर, क्या कहा आपने? हाँ, तो मेरा सवाल ये था, क्या आपने कैंगन वाटर का डेमोन्स्ट्रेशन देखा है? क्या देखा है सर? ओके, तो कैंगन वाटर डेमोन्स्ट्रेशन अगर देखा है, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि कैंगन वाटर क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, कैंगन पानी क्या है जिसके इतने चर्चे हो रहे हैं? ये एक हाइड्रोजनेटेड वाटर है सर, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में काफी सपोर्ट करता है। आज के समय में हम सारा चीज कंटामिनेशन ले रहे हैं, कंटामिनेटेड ले रहे हैं, क्योंकि खाना पानी सारा चीज हमारा पॉल्यूटेड हो गया है। हमारा कैंगन वाटर बस एक काम करता है कि हमारे पानी से उस जो गंदगी है उसको साइड कर देता है, और जो प्योरिटी पहले हमें मिलती थी, जो वॉल वाटर या बहते नदियों के पानी में जो क्वालिटी मिला करता था, उस क्वालिटी को हम तक पहुंचाता है, जिससे सारे मिनरल्स सारे आयंस हमें मिलते हैं और हमारा शरीर हेल्दी रहता है। ओके, ग्रेट। क्या आपको लगता है कैंगन वाटर का दाम वाजिब है? यस सर। ओ ग्रेट, ऐसे आपको क्यों लगता?
क्योंकि मैं कुछ सालों से यूज कर रहा हूँ। मैं एसिडिक एक्यूट एसिडिक का पेशेंट था। अगर मैंने दही खा लिया तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना था। और मौसम चेंज होने के बाद मैं हमेशा बीमार रहता था। कमर में मेरा बहुत ज्यादा पेन होता था। मैं कई डॉक्टर्स को दिखाया, वेल्लोर तक गया हूँ, फिर भी ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैं डायबिटिक था, बीपी का पेशेंट था। ठीक है। ये सारी चीजें मेरी कई सालों से 2008 से मैं झेल रहा था, पर ठीक नहीं हुआ। मैंने 2017 को ये मशीन लिया। 2018 तक मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं दिखा, लेकिन 2019 के बाद से, मतलब 18 बीतने के बाद, मुझे इसमें बहुत सारे चेंजेस मेरे बॉडी में दिखे हैं। मैं किले वेल्थ होटल में इसका डेमोस्ट्रेशन देखने जब गया था कलकत्ता में, आप भी वहां पे थे शशिधर, सब लोग खाना खा रहे थे, वहां चाय कॉफी का आनंद उठा रहे थे। मैं 4 लीटर पानी वहां पे पिया था 2 घंटे में। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरा बैकबोन का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मेरे लिए लगता है सर, ये 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया अभी फ्रूटफुल है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा पैसा हॉस्पिटल में खर्च कर चुका और रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे लिए तो ये सस्ता है सर, महंगा नहीं है। और आज के डेट में तो ये सस्ता नहीं सर, मेरे को तो कैंगन वाटर यूज करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। दैट वाज वेल सेड। मुझे ये स्टेटमेंट आपकी बहुत पसंद आई। आपका जी। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। जी। आप रियली इंडियन वाटर आपको पीने के पैसे मिलते हैं। एंड दैट इज जी। ब्रिलियंट, अमेजिंग। थैंक यू धर्म पाजी। और कोई शेयर करना चाहता है यहाँ पे? आपने कैंगन वाटर डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, तो कैंगन वाटर क्या है? क्या उसका प्राइसिंग वाजिब है क्या? इज इट द राइट प्राइसिंग की महंगा है? क्या लगता है हमें? एनीबडी वांट्स टू शेयर? सर कैन आई? यस प्लीज, ऑफ कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धर्मेंद्र जी का बहुत चीयरअप करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा। जस्ट एक सेंटेंस था वो लास्ट का, दैट्स व्हाट ही सेड, कि कैंगन पानी पीने का आज मुझे पैसा भी मिल रहा है। सी वो, इट वाज नॉट अ बिग लैंग्वेज, इट वाज नॉट अ बिग कम्युनिकेशन, और कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं था। इट वाज जस्ट जेन्युइन ऑर्डिनरी टेस्टिमोनी थी दैट मेड मी टू नाउ कम ऑन वीडियो एंड टॉक। धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये कन्विक्शन जो है ना, लास्ट का सेंटेंस आपका, कि आज कैंगन पानी पीने का मुझे पैसा भी मिल रहा है, ये कई कई टेस्टिमोनियों से ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट है। और आपने जो ये बताया कि जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे, मैं 4 लीटर कैंगन पानी पी रहा था, और उससे कई ज्यादा मैंने हॉस्पिटल में स्पेंड किया है। So it shows you so much of conviction, and before drinking water, so much of your struggle and hard work to get your health back. तो यस सर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कम टू द पॉइंट, की कैंगन हर एक के लिए, कैंगन इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। फॉर somebody इट कैन बी अ प्रोडक्ट, फॉर somebody इट कैन बी अ सब्जेक्ट, फॉर somebody इट कैन बी अ बिजनेस। मुझे कभी पता नहीं था। फॉर मी कैंगन वॉज अ प्रिवेंशन, एंड दैट्स हाउ दैट केम इन माई लाइफ, entered in my life for my family. And today Kangen water has become a university for me. So again, I'll say, sir, thanks to you. मुझे literally when I look back 8 years back, मुझे बिल्कुल भी ऐसे लगा नहीं था कि केंगन के इतने डीप सब्जेक्ट में मैं भी आऊंगी। I thought I would just enjoy the water and the product. एंड टुडे व्हेन आई एम डूइंग बिजनेस, मुझे अभी भी पता है वो पहला दिन, इवन एट द टाइम ऑफ कैंगन ऑल्सो, कि आई सपोर्ट यू, आई जस्ट बी विथ यू, आई शो द डेमोन्स्ट्रेशन, आई ड्रिंक वाटर, एंड दैट्स इट। आई जस्ट रोम अराउंड विथ यू, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी आपके साथ। बट आज जब मैं लोगों को फॉर आई एम एक्सप्लेनिंग पीपल दिस कैंगन सब्जेक्ट एज अ बिजनेस प्रोजेक्ट, तो मुझे बहुत हंसी आती है खुद की। स्पेशली व्हेन यू cheer up me, when you said that well done Aru, you are doing good job for business. तो for me this is my achievement in this particular industry, direct selling industry. उससे पहले जो अवार्ड मिला, जो कुछ भी मिला, मुझे वो अंदर से फील नहीं हो रहा था। So for me Kengen is a very very
बहुत एक्साइटमेंट है मेरे लिए। कैंगन इज एक्साइटमेंट फॉर मी, and I'm just enjoying that, enjoying this tour maybe, and enjoying this mode of Kengan. Wow, great, Arun. Good sharing. So, दोस्तों, I don't see rest of the people on the screen, so difficult for me to announce your names and to get you here and get a feedback feeler before we move on to get more clarity. ये केंगन है क्या? 30 मिलियन फैमिलीज जो लोग ये प्रोजेक्ट में शामिल है, या तो वो एंड यूजर्स है, एंड कस्टमर्स है, पानी पी के पानी का लाभ उठा रहे हैं, उनके खुद के लिए, सेहत के लिए और खुद के परिवार के सेहत के लिए। दिस इज नंबर वन। और सम पीपल आर समटाइमर्स, मूड आया तो बात करते हैं, मूड आया तो पानी पीते हैं, मूड आया तो इसके बारे में मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो मूडी लोग होते हैं, तो समटाइमर्स ऐश कर रहे हैं, है ना। फिर कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइमर्स हैं, सीरियसली इस प्रोजेक्ट को समझते हैं, पानी का भी बेनिफिट लेते हैं हेल्थ के लिए और वेलनेस के लिए, और प्रोजेक्ट को भी समझते हैं और बकायदा प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। एंड दैट्स फैंटास्टिक। पार्ट टाइम काम करते हैं लेकिन फुल टाइम एटीट्यूड के साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और डायमेंशन जो है, कामयाबी का अगर रास्ता खोलना है आपको, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द फोरम एज अ माइंडसेट एंड एटीट्यूड? दिस विल डेफिनेटली डिटरमाइन एंड डिफाइन कि आप कितने कामयाब होंगे या कितने स्ट्रगल करेंगे ये बिजनेस को, ये प्रोजेक्ट को समझने के लिए और बिल्ड करने के लिए। चलिए, यहाँ पे आनंद जी है। आनंद जी, आपको क्या लगता है केंगन वाटर क्या है आपके लिए, और क्या इसका प्राइसिंग जो है वो जायज है क्या? इज इट अफोर्डेबल? सर प्राइस, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं प्राइस के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मशीन फायदेमंद है। मैं लगभग 3 साल से पानी पी रहा हूँ और इसका बेनिफिट मुझे बहुत मिला। मेरा वाह। नी का पेन था, नी पेन में मैं दवा खाता था और मेरा नी पेन इसी से बहुत चला गया। अब दवा कोई नहीं खाता हूँ। एक आयुर्वेद डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियाँ चलते मना कर दिया था। मेरे साहब ओके। बोला, डॉक्टर साहब मेरे पास 2 मकान हैं, दोनों 4 तल्ले पे है, 4 तल्ला मुझे चढ़ना ही चढ़ना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास, तो आप कैसे बताओ क्या करूं? तो दवा खाओ आप। मैंने दवा कुछ दिन खाया, फिर दवा छोड़ दिया। उसके बाद मैं आज पानी पर ही चल रहा हूँ, लेकिन हाँ ठंड में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आज मैं वेस्टर्न पैंट को छोड़ के इंडियन पैंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मुझे बेनिफिट मिला। फैंटास्टिक। लेकिन है फायदा, ऐसी बात नहीं है। और भी मैं लोगों को बहुत पानी दिया हूँ, उसमें उन्होंने फायदा किया। 11.5 का तो मिरेकल रिजल्ट है। मैं पर डे लगभग 1 लीटर मैं 11.5 पी लेता हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग, और बाकी रेस्ट डे तो 9.5 चलता है। और आज के समय में खाना भी उसी में बना रहा हूँ 9.5 में ही। मतलब 11.5 और 9.5 का इस्तेमाल ज्यादा है हमारे पास है। वैसे तो छोटा सा फैमिली है, हम लोग 3 लोग ही मात्र हैं, और बाकी सब बढ़िया है, सब अच्छा है। अमेजिंग, मैं धर्मेंद्र अमेजिंग। जी को थैंक धन्यवाद यू देता आनंद हूँ। जी, थैंक यू। बहुत महीनों सालों बाद आपकी आवाज सुन रहा हूँ आनंद जी। जी सही, आपको बिल्कुल फॉरम सही में सर। तो देखता रहता हूँ आते जाते, आनंद जी बट के चेहरे पे सर अभी ग्लेज भी पूरा आया है, पूरा लुक बदला है सर अभी। इसीलिए तो उनको आज टेस्टिमोनी के लिए बुलाया। बिल्कुल वजह वही है, उनका चेहरा चमक रहा था, मैं रोक नहीं पाया खुद को, उनको बुलाना ही था। तो वेलकम, थैंक यू फॉर द शेयरिंग आनंद जी। एंड थैंक यू सर, थैंक यू। ऑफ कोर्स वेलकम विनीत जी। आपके हिसाब से केंगन वाटर क्या है? अफोर्डेबल है, महंगा है, सस्ता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। सर देखिए, दो चीज है। कैंगन वाटर मशीन, कैंगन मशीन की कॉस्ट और कैंगन वाटर के बेनिफिट्स। अभी जो बेनिफिट इस वाटर से हेल्थ के होते हैं टू फॉर अस और हमारी फैमिली के लिए, उसका अगर आप कैंगन की मशीन की कॉस्ट से कंपैरिजन करें और जो मनी विच यू गोइंग टू सेव इन द लॉन्ग रन, वो आदमी को वो दिमाग में सोचना है। अगर आप सोचें कि आप लॉन्ग रन में
अब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती है, आपको कोई मेजर डिजीज नहीं होता है, देन दिस मशीन इज एज गुड एज फ्री। इट डज नॉट, उसकी वैल्यू की कोई मतलब वैल्यू उसकी कोई डाल ही नहीं सकते आप, क्योंकि जो हेल्थ की वैल्यू है, जो हेल्थ को मेंटेन करने की कॉस्ट है, वो आई मीन टू से कि मशीन इज तो लाइक नथिंग एज कंपेयर टू दैट। तो कॉस्ट ऑफ मशीन लोगों को आज किसी को भी आप डिस्कस करें, वो सबसे पहले कॉस्ट पर ही आके अटकते हैं। लेकिन आप उनको एक्सप्लेन करें कि भाई ये मशीन की कॉस्ट 25 साल इसकी लाइफ है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग पानी पिएंगे, आपकी पर ईयर की कॉस्ट क्या आएगी, आपकी पर पर्सन की कॉस्ट क्या आएगी, तो थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आता है। लेकिन फिर भी पूरा समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने वो हेल्थ का जो बेनिफिट है वो नहीं समझा है। और जितनी मर्जी टेस्टिमोनीज दिखा लो, जितने मर्जी उनको वीडियोस दिखा लो, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते उनको बिलीव नहीं होता है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। उनको लोगों ने कहा भाई, जैसे अभी सर ने कहा इधर कि भाई मेरी नी पेन ठीक हो गई, अभी उनकी ठीक हो गई, उनको नहीं लगता है उनकी ठीक होगी ये पानी से। तो ये बहुत बड़ा माइंडसेट की बात है। अभी उसको माइंडसेट को ओवरनाइट नहीं चेंज किया जा सकता, उसको धीरे 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 स्लोली इट हैज टू बी चेंज। जैसे आप हमको एजुकेट करते हैं एवरी वीक, स्लोली 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 यू पुट थिंग्स इन आवर हेड। वो सेम चीज आप, सो मेनी थिंग्स यू टेल अस सो मेनी टाइम्स, वो बार बार जब हम सुनते हैं वो दिमाग में घुसती जाती है, घुसती जाती है, और फाइनली जाके वो फाइनल फिक्स हो जाती है। सेम वे इस मशीन के वाटर का, इस मशीन की हेल्थ का, सारे बेनिफिट्स का कंटिन्यूस लोगों को बताते रहना पड़ेगा, तभी जाके उनको समझ में आएगा कि ये मशीन की कॉस्ट इज नथिंग एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द मनी विच वी आर गोइंग टू सेव बाय कीपिंग ourselves and our family healthy. That's what I feel. फैंटास्टिक विनीत जी, गुड शेयरिंग, अच्छा लगा। एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू फॉर लॉट ऑफ पीपल हियर। और चलिए और भी लोगों से पूछते बिफोर आई गिव माय पर्सपेक्टिव। एक नया डायमेंशन शुरू करेंगे आज। तो चलिए सुमा जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो क्या कैंगन वाटर आपके लिए क्या है? अगर हमने कैंगन वाटर का डेमो देखा है तो व्हाट डज कैंगन वाटर मीन टू यू? और जो प्राइसिंग है, इज इट अ वैलिड प्राइसिंग और इज इट एक्सपेंसिव, इज इट चीप, व्हाट इज इट? यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। Suma Gowda, if you can talk, I don't know. Yes, I can, sir, but can you please repeat the question? Yeah, the question was, what does Kangen water mean to you? And do you think Kangen water is highly priced or affordable or very economical to have one? क्या लगता है आपको? Okay. First of all, if anything is called essential in life, that is first thing is air, and the second thing is Kenyan water. And then talking about whether it is affordable or costly है, मुझे तो इतना पता है और मैं इतना बोलने की कोशिश करती हूँ कि ये जो चीज है, we are worth it, like I am worth it. तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं, then only you can know the value of it. पहले तो हमें ये समझना है कि whether we are worth of having this miraculous water or this blessing in our life. मुझे तो वो लगता है पहले तो जब हम worthy है to lead this healthy lifestyle and this miraculous water, who can tell more better than going from having अगर एक डिलीवरी पेन के बारे में बात करनी है तो यू कैन आस्क ओनली अ मदर, राइट? एक औरत को ही पूछ सकते हैं, लाइक दैट। जो भी ये जो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस होता है वुमेन के, दैट ओनली वुमेन कैन शेयर इट, एंड ओनली शी कैन फील दैट पेन. So
8 years, 8 years before, somebody saying there is nothing else than the uterus removal surgery for the complication that I have undergone. And आज भी मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि सिर्फ पानी पीने से मेरा जो तकलीफें थी वो 85% कम हो गई. And don't know how to tell people or to prove or something like that when if somebody having 2 menstrual cycles per has been having a normal over a period of just 3 to 6 months of drinking this water. Obviously no medical claims here, this is my personal testimony. So than speaking whether affordable or costly, I would say everybody is worth of having this water, their life worth उनके लिए बोले या about the family members, they are worth drinking this water. Thank you. That's amazing, Suma. चलो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा अलग अलग लोग हैं, अलग अलग व्यूज हैं. अभी भी बाकी काफी कुछ लोग हैं. We have got the best, but we have reserved the best for the last. जब हम सेशन के आखिरी सेशन के पार्ट में आ जाएंगे, that is the time when we'll have Chinnappa ji, Janak ji, all those experts to also share their wisdom and experience. So, आज why are we today talking about this? We are talking about Kangen, we are talking about demonstration, and also we are talking about perspective. Kangen के perspective को लेके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो दोस्तों, the point is this. Kangen water technology is here to stay. आने वाले already 50 years the company is completing in this June, and it is here to stay for another 50-100 years. क्योंकि अगर आप केंगन की स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, है ना, जैसे मैं हमेशा वापस जाऊंगा तो 5 P's, द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, द प्रोफाइल ऑफ द प्रमोटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें काफी कुछ छिपा हुआ है और काफी कुछ रहस्य हम लोग ओपन अप कर सकते हैं. तो अगर वो प्रोफाइल ऑफ द कंपनी देखेंगे, पिछले 50 वर्षों में ये जो टेक्नोलॉजी है, इट हैज रीच्ड मोर देन 3 मिलियन फैमिलीज. मतलब 30 लाख परिवार तक पूरे विश्व में पहुंच पाया है इन द लास्ट 50 years. Isn't it amazing? 30 lakh families are beneficiaries, either as an end user, as a sometime, as a part timer, as a full timer or over timer. हर तरीके से change your water, change your life. ये तो 30 लाख परिवार के लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आया है जब से उन्होंने केंगन वाटर प्रोजेक्ट को अपने घर का जीवन का हिस्सा बनाया है. अलग अलग लोगों के अलग अलग टेस्टिमोनीज है, अलग अलग अनुभव है, और इट्स बीन अमेजिंग. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आपके ख्याल में एक बात आता है? इन 50 years वी आर टॉकिंग ऑफ 30 lakh families और 3 million families वर्ल्ड वाइड इन 40 लोकेशंस जहां पे हमारे ऑफिसेस हैं, और 25 कंट्रीज के भीतर में हमारा एस्टेब्लिशमेंट है. 25 कंट्री में 40 लोकेशन में अलग अलग जगह पे इस कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड हो चुका है लीगली, ऑफिशियली, और 172 कंट्रीज में हम लोग ये बिजनेस को फैला रहे हैं. वी आर एक्सपैंडिंग एंड शेयरिंग दिस होल प्रोग्राम. बट दिस 30 lakhs, अगर हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, 8 बिलियन का वर्ल्ड पॉपुलेशन है. कितना परसेंटेज हुआ? Less than 2.5% of the world population today are either Kangen users or Kangen beneficiaries. Less than 2.5%. मतलब ये जो आंकड़ा है ना, this figures don't lie. 2.5% के नीचे अगर मार्केट पेनिट्रेशन हुआ है इस प्रोजेक्ट का इन 50 years, क्या कोई बता सकता है मुझे ये कंपनी और कितने साल लगेगा इस कंपनी को 100% मार्केट शेयर में पहुंचने के लिए? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, वी आर एट 2.5% और 97.5% मार्केट शेयर बाकी है टच करना. लेकिन ये 2.5% मार्केट शेयर टच करने को 50 years लगा. तो
रिमेनिंग 97.5% मार्केट शेयर को सैचुरेशन लेवल पे आने के लिए कितना साल लगेगा? एनी गेस? चिन्नप्पा ब्रो, गुड इन कैलकुलेशन। जनक जी, मुझे हिसाब किताब चाहिए। 50 साल में 2.5% मार्केट शेयर हमने हिट किया, तो रिमेनिंग 97.5% मार्केट शेयर हिट करने को कितने साल लगेंगे? ना, तो बनाओ, पी लेते हैं। आई थिंक 50 ईयर्स सर। 50 इयर्स में तो 2.5% टच किया। रियल आने I वाली think रेस्ट it will be रेस्ट के लिए lesser than 50 that. ईयर्स सर। Lesser than that. हाँ 50 तो तो नहीं कितना? हो सकता। हाँ तो कितना हो सकता है? आधा? 30 शायद. नहीं ना, Because the 25। awareness is more and we will see 25% ना। मैं बेनिफिट देता हूँ ना, 25 लेते हैं, 25 इयर्स मान के चलो। 50 इयर्स में 2.5% मार्केट शेयर पेनिट्रेट किया, और बाकी का सारा जो है 2.5% है वो 25 इयर्स में करते हैं, तो 97.5% मार्केट शेयर कवर करने के लिए कितना पीरियड, कितना साल लग सकता? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? In 50 years, we hit 2.5% of the market share. रिमेनिंग 97.5% मार्केट शेयर तक पहुंचने के लिए हमें कितना साल लग सकता है? Maybe 150 years. हेलो, सब लोग स्कूल गए क्या? ये बीन टू स्कूल? मैथमेटिक्स सबने पढ़ाई की है? Yes, sir. 1950 years. वाह, 1960 इयर्स तक केंगन 50 चलेगा। years. तो कितना जनरेशन? आपका 10 पीढ़ी चलने तक केंगन सैचुरेट नहीं हो सकता। क्या किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या हिसाब बता रहा हूं? यस सर। Up to your next 10 generations, provided they live for 100 years. Again, each generation lasts for 100 years. नहीं तो 20 generations तक भी केंगन उतना फुल मार्केट पोटेंशियल टच ही नहीं करवाएगा। या दिमाग का बत्ती जला, why we should do केंगन? ये जापान का विजन है। जापानीज लोग जनरेशन टू जनरेशन सोचते, ये तो ऑलमोस्ट 10 से भी आगे जनरेशंस के बारे में प्लानिंग की कि मार्केट सैचुरेट हो नहीं सकता, ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड नहीं हो सकता। अगर 50 इयर्स में कॉपी नहीं हुआ तो यकीनन दावे के साथ हम बोल सकते हैं, जिस तरह वाटरफॉल आर्टिफिशियली सब जगह आजकल पाए जाते हैं, है ना, शोपीस करके लगाते हैं, फवारे फाउंटेन्स लगाते हैं स्प्रिंग वाटर मिनरल वाटर की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, तो कितना भी कोई भी कुछ कर ले तो केंगन विल लास्ट फॉर another 1000 years गाइस, इफ आई गो बाय द लॉजिस्टिक्स। अगर लॉजिक लगाऊं, लेब्रेन लगाऊं, 5P को एनालाइज करूं, ये रिवोल्यूशन है व्हाई वी शुड डू केंगन। और उसके बाद ये वर्ल्ड पेटेंटेड है, ये रिसेशन प्रूफ है, पेंडेमिक प्रूफ है, सुनामी प्रूफ है। कैन यू अंडरस्टैंड? शो मी वन प्रोजेक्ट which gives us this luxury and security of luxury. मैं बोलता हूं मैं इतना सुकून के साथ काम कर सकता हूं ना, मुझे मालूम है फॉर नेक्स्ट 1960 years, जो भी है 1000 years ले लो ना, 1000 साल, हम जितना जिंदा रहेंगे उससे 10 जनरेशन आगे तक चलने वाला ये लीगेसी प्रोग्राम है, ये लीगेसी एजुकेशन है, और ये लीगेसी प्रोजेक्ट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस ग्लोबल प्रोजेक्ट। मैं ग्लोबल इसके लिए बोल रहा हूं, गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पीपल ब्रीथ, है ना, सब जगह लोग सांसें लेते हैं, राइट? और दुनिया में कहीं भी जाओ, any caste, any gender, any age, any creed, whatever, people also drink water. Amazing. तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? एंड दिस इज नेक्स्ट टू ब्रीथिंग। अगर कुछ इजी है प्रोजेक्ट में, है ना, फॉर द लेजिएस्ट ऑफ पीपल सांसें लेना भी मुश्किल पड़ता है उनको, बट नेक्स्ट टू ब्रीथिंग अगर कुछ आसान है तो पानी पीना है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बोलूं, ये पानी में आपका जीवन है, ये पानी में आपका फॉर्च्यून है, ये पानी में
आपका लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए, एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड टू समथिंग phenomenal accumulation and creation of good health, wealth, peace of mind to the entire humanity, guys. मतलब अगर हम हमारे जनरेशन्स को बाजू में करके आजू बाजू वालों के जनरेशन्स की भी सोचे, हमारे पूरे देश के बारे में सोचे, पूरे वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी के बारे में भी सोचे, तो वी आर ब्लेस्ड. We can adopt this project, guys, as brand ambassadors of True Health Mission. और अगर ब्रांड एम्बेसडर में बोलूं ऑफ ट्रू हेल्थ मिशन क्यों बनना है, I'll tell you the amount of fortune, the kind of royalty, the kind of bonuses that you can anticipate and expect. एक छोटा सा सैंपल दूंगा आपको. Like there are people who have already earned a bonus as a brand ambassador that is more than almost 2.5 crores to 5 crores. Ladies and gentlemen, अगर मैं बोलता हूं इन INR में बात कर रहा हूं, अगर वो 2.5 crores to 5 crores का बोनस वन टाइम भी मिलता है ना, मैं समझता हूं किसी का लाइफ टाइम का एक घर बनता है, एक विला बनता है. आप सोचिए 5 करोड़ आपके पास बोनस आता है, आप कौन से कंट्री में जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते? Show me one place on planet Earth where you are not invited if you have earned a bonus of 5 crores. आप अपना घर इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी में कहीं भी द मोस्ट प्रीमियम ऑफ कंट्रीज में जाओ, प्लेसेस में जाओ, आपका घर बन सकता है, एक विला बन सकता है आपका 5 करोड़ में मिनिमम, छोटा सा. लेकिन ये तो मैं सिर्फ बोनस की बात कर रहा हूं. एंड व्हाइल यू आर गोइंग टू अर्न द बोनस ऑफ 5 crores अ विला एज अ बोनस, उस दरमियान आपने कम से कम उसका 10 times मोर कमीशन कमाया होता. नाउ इमेजिन इफ योर बोनस इज 5 crore multiplied by 10 times, that is the commission we would have earned as an income in the process. लेकिन जब मैं बोनस की बात करता हूं, जब मैं इनकम की बात करता हूं, ladies and gentlemen, this income is not possible, this bonus is not possible until and unless you take all the water literacy and water education along with your journey of drinking water while sharing with the whole world, and unless you help minimum 1 million families, मतलब 10 लाख परिवार को अगर आप मदद नहीं कर पाते या नहीं करते, तब तक ये जो बड़ा इनकम ब्रैकेट मैंने बताया, यू कैन नॉट एंटीसिपेट. आज देखिए जो कंपनियां फायदे में है, बड़े बड़े इनकम्स और टर्नओवर की बात करती है, उनके 1 मिलियन कस्टमर्स होते हैं, 2 मिलियन कस्टमर्स होते हैं, 3 मिलियन कस्टमर्स होते हैं, तब जाके तो उनकी लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल अर्निंग्स एंड इनकम्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है बार बार. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पहले मुझे फाउंडेशन में वाटर लिटरेसी, वाटर एजुकेशन समझना पड़ेगा, मजबूती क्रिएट करना पड़ेगा फाउंडेशन में वाटर लिटरेसी का, एंड देन यू आर एम्पावरिंग at least 1 million families. Let it be in 1 year, let it be in 2 years, let it be in 15 years, let it be in 20, 30, 40 years, your entire lifetime, guys. So what? My question is, so what? अगर आपके पूरी जिंदगी लग जाए इसमें, ऑलमोस्ट 3 to 4 decades, 30-40 साल भी लग जाए, तो बुरा क्या है? आपका घर बन गया, आपका वर्ल्ड टूर बन गया, आपके परिवार की हर जरूरत पूरी हो जाती है, आप दुनिया के सबसे बेहतर कॉलेजेस में अपने 2 नहीं 10-10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं. अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपके पास पैसे ज्यादा है, यू कैन अडॉप्ट द एजुकेशन ऑफ लॉट मेनी किड्स अक्रॉस द ग्लोब, और उनको बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं. सो दैट इज द पावर ऑफ अ प्रोजेक्ट. अगर ये प्रोजेक्ट देखना है, डोंट लुक एट इट एज जस्ट अ मशीन. एक डिवाइस मुझे घर में खरीदने के लिए 3 लाख तो महंगा पड़ेगा, एक डिवाइस मेरे घर पे लाने के लिए 4 लाख रुपया महंगा पड़ेगा. यूएस डॉलर में अगर मैं बोलूं $5,000, $6,000 महंगा पड़ेगा, बिकॉज यू आर सेल्फिशली थिंकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली. But if you look at the potential of
a possible 5 crore bonus and a 50 crore or 500 crore income that can happen to you along this journey by empowering 1 million families. Can you imagine the starting cost for the project? To earn your millions of dollars is just about less than 6,000 US dollars. मतलब मैंने वन टाइम लाइफ टाइम 6,000 US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में किया. And if it is going to earn me a fortune of a lifetime, it's amazing, guys. And no risk, no inventory, no liability, no logistics, no admin cost, no legal licenses required. Because ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना प्रोजेक्ट में आपको और हमको बेनिफिशियरी बनाने के लिए एंड टू मेक अस स्टेक होल्डर्स इन द $1 trillion ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री. Here is the first company of this size, this stature, a $1 billion company with proven track record of 50 over years and 30 million families empowered and benefited. जब मैं 30 million, I mean 3 million families बोल रहा हूँ, 30 lakh people or 30 lakh families, I'm talking of who's who of the world. Bill Gates, Barack Obama, Donald Trump, Angelina Jolie, Brad Pitt. You talk of all the kings, the queens, the presidents, the senates, the governors, the CMs, the PMs. It's mind-blowing, guys. Hollywood to Bollywood. And of course, all of us, those who are present on this platform. तो इतना बड़ा project है ये drinking water project. And today, let us take pride. Congratulations to each one of us here on this platform at this point of time, because you have already invested on your stakes. अगर आपने अपने परिवार के लिए खुद के लिए एक डिवाइस खरीद लिया है तो आप ऑलरेडी ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर हो. एक $1 billion कंपनी के स्टेक होल्डर हो, $1 trillion ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर आप ऑलरेडी हो. नाउ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इज, हैव यू रियलाइज्ड इट? अगर आप रियलाइज नहीं करते हैं तो ये जर्नी आपको स्ट्रगल जैसा लगेगा, क्योंकि आप अंधेरे में भटक रहे. यू आर ग्रोपिंग इन द डार्क. With this realization, you will understand that I need to become better and better so that I get maximum potential distribution profits coming back to me and my team and my family members, guys. It is very important. The company has been distributing anywhere between 5% to 40% of the whole marketing cost back to our families as brand ambassadors, people who are showing demonstrations, people who are sharing the business plan, people who are sharing the water, people who are talking about this opportunity, or even the people who are just following the water protocol and consuming the water. ये सब करने के लिए हमारे पास एक प्रॉफिट शेयर वापस आता है, guys. And people who have stopped drinking automatically स्टेक होल्डिंग में से उनका स्टेक्स डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि जहां पे इसमें स्टेक्स बरकरार रखने के लिए द नंबर वन एलिमेंट इज योर बिलीफ. इफ योर सेल्फ बिलीफ इज लो, अगर आपका सेल्फ बिलीफ ही खत्म हो रहा है तो आपका स्टेक्स डाइल्यूट हो जाएगा. धीरे धीरे आप कैंगन के बाहर अपने आप हो जाओगे. तो इंपॉर्टेंट है टू रिटेन योर सेल्फ बिलीफ. और ये सेल्फ बिलीफ तभी आएगा जब हमें एहसास हो जाएगा वी आर स्टेक होल्डर्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री, $1 trillion ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री. तो चलिए ये प्रोजेक्ट को हम लाइव बात करते हैं कुछ. वी हैव गॉट अ वीडियो. इस वीडियो में आपको पता चलेगा व्हाट द $1 trillion इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट. आरू, इफ यू कैन हेल्प मी प्ले द वीडियो. थैंक यू.
Aru, I want the video. The microscope video. Aru, are you able to look at the video? Yes, sir. I want that microscope video. Okay, not this one. No. Okay. Same? Is this the same? I'm not. guys? I hope everybody's having. But yeah, your screen share is with PPT. Yes, sir. The PPT is visible on the screen. Okay. I want to see the video, please. Sir. Now? Now you have to play the video. Now it will play. Okay, I just played that video only. Okay, now? Is my screen is visible with my... Yeah. Now it's okay. Go ahead. Okay. And a lot of people message me about this issue, and that is what happens to your blood cells when you drink coffee, what happens when you drink regular bottled water, and what happens when you drink Kangen water. So I thought I would do this test myself. So I got my Lancing device, I got my needles, I got my microscope, I got my slides. I mean, I'm ready. So let's get this started. And here we go. Got a little blood. Man, I really feel for people that have to do this every single day. You know, not look at their blood under the microscope, but you know, to poke themselves and check their sugar. You know, that's crazy. So let's see how is my blood cells right now. So I just woke up, right? I just woke up. I didn't drink water last night because I knew I was gonna do this video today. So I wanted to be, you know, the regular person that doesn't drink as much water before they go to sleep. So right now we're at 10 times zoom, and you can see that my blood cells are really not moving at all. They're not moving, which means that, you know, I'm really dehydrated, and this is how my blood is right now. I'm gonna go ahead and put it on to 20 times, and you can see how you can see my blood cells individually, but they're stuck together and not moving, guys. And this is what happens for most of you guys that do not drink water. And when you wake up, what are you doing when you're waking up? What are you putting inside your body when are you waking up? This is really important, guys. As you can see, mine is really still. Wow, guys. Let's go to 40 times zoom. Again, guys, it is crazy. You can see them, but they're not moving at all. They're kind of moving. I can see them kind of moving now, but they're not moving like they should be. So now let's go to 60 times. And there it is, guys. I mean, you can see them like barely moving, but you know, they should be like moving. They should be all over the place, and it's crazy. So I'm gonna be doing what most people do every single morning, and that is drink a cup of coffee. And I put almond creamer in here and no sugar. I didn't put no sugar in here. I used to be a really heavy coffee drinker back in the day. I used to drink at least 3 cups a day, in the morning, mid-afternoon, and right before I went to sleep. Yes, I drink coffee before going to sleep. I don't know how I did it. I seriously don't know how I did it. But today I'm gonna be drinking another cup of coffee. I drink coffee every now and then, not as often as I used to. And I actually, when I do drink coffee now, I make it with my Kangen water, but this is actually made with just regular plain water, just to see what happens to my blood, and I didn't want to affect the coffee with the Kangen water. And that's gonna be another test that I want to do. I want to see the difference between
coffee made with Kangen water and regular plain water. So that'll be really interesting to see. But in this case, I just use regular plain water for this purpose. So I'll drink this coffee and I'll be right back. All right guys, so it's been 10 minutes since I drank 12 ounces of cup of coffee with almond creamer. Okay, so I'm gonna be testing my blood again and see if we can see any differences. So boom. Bah! Woo! All right, so right now we are looking at my blood 10 times soon. They are moving a lot more than they were, which is good, which is a good thing, right? But you can see that they're still getting stuck to each other, and that's because the blood cells are not surrounded with a negative charge around them to bounce off each other. So let's go to 20 times soon and see if we can see any closer. And yeah, as you can see how the cells are forming lines, they kind of look like coins stacking up with each other, and that's it's a formation called Rolux. I don't know how to pronounce it very well, but it's a formation in your blood that is associated with chronic liver disease and chronic inflammations throughout your body. This doesn't necessarily mean that you're about to die, but if you continue to drink this type of stuff and you continue to form your blood like this, then over time, then it can produce some damage in your body. So let's go to 40 times soon. And as you can see, the blood cells are still moving a little bit, but you can still see how they're still stacking up with each other, and you know, that's not a good sign. So let's go to 60 times. What you want to see is every blood cell individually and bouncing off each other and just moving all over the place. Obviously right now it is moving more than it was, but it's still stacking up with each other and it's not moving as fast. So now I'm gonna be drinking bottled water, and I'm gonna be seeing what happens within 10 minutes of drinking bottled water. So I got freaking Dasani here. I don't know how I feel about this. I haven't drank bottled water in a long time, so I guess we're gonna see how it tastes. So I'm gonna be drinking 12 ounces of Dasani water. That is 12 ounces right there, so cheers. Or I don't know about that. I don't know. It has this weird taste to it. I don't know. And I can feel the difference. I can definitely feel the difference. I can taste the difference. It has I don't know, it has kind of like a plastic, it's a weird taste. I don't know. And obviously I can feel it in my stomach. So I'm just gonna wait 10 minutes and see what happens to my blood cells. Alright guys, I'm back, and it's been 10 minutes since I drank 12 ounces of Dasani water. Yeah, I know, pretty boring. But let's go ahead and see what effects had in my blood. Oh, I didn't poke it. Boom! Let's do it again, baby. Woo! You can see the blood cells moving. This is a 10 times zoom, and to be honest, you can see the little blood cells has separated a little bit. This is a 20 times zoom, and yes, my blood cells has separated a little bit, but you cannot see them moving as they should be, right? So at least we don't see the coin stack formation anymore, and at least we see some separation, but I want to see more movement. So let's go at 40 times zoom. All right, that's 40 times zoom. And let's go to 60 times zoom. Alright guys, so this is a 60 times zoom. As you can tell, the blood cells are individually, but you can see some of them are still stuck to each other and not moving much. So now this is the good part, and this is where I get really excited, and that is drinking 12 ounces of Kangen water. So I'm gonna go ahead to my machine, get 12 ounces and see what happens after 10 minutes. Alright guys, so here's my Kangen machine, and let's get some 9.5, and I got my measuring cup just in case there's some skeptics
out there saying, oh, you know, he drank more than 12 ounces, whatever. So let's go and see 12 ounces. Just under 12 ounces, and you can see the hydrogen in the water. So let's go ahead and pour it in this cup. There you can see the hydrogen in the water. That is beautiful. That is beautiful, guys. That is what you want to be drinking every single day. And that's why they say drink the cloud. Alright guys, so I have 12 ounces of Kangen water, 9.5 pH water, and I'm about to chug this, and we're gonna be seeing the results after 10 minutes. Now, wow, you can really tell the difference between Kangen water and this stuff. I mean, you really can't compare. That's like comparing Bud Light to an Estella. You really can't compare that. But let's just wait 10 minutes and see what happens. Alright guys, so it's been 10 minutes since I drank 12 ounces of Kangen water. So let's go and poke myself again. Alright guys, so this is at 10 times zoom, and I can clearly see more cells moving around. Not as much as I would like to, but just keep in mind that I did drink coffee and I did drink Dasani, and both of those beverages are really acidic, full of protons, so it doesn't help my blood at all. So let's go at 20 times zoom, and you can see that the cells are, you know, moving more than the previous test. And my belief is this is because the hydrogen, which is negative charge, is surrounding those cells, and those cells are actively moving and bouncing off each other. So let's go in 40 times zoom. You can clearly see the difference in your blood cells after drinking Kangen water, and this is why I wanted to do this video. Let's go at 60 times. This is the main reason why I made the investment into the microscope, you know, because I wanted to show you guys the power behind hydrogen water. You know, so it's one thing me telling you what this water does, but it's another thing actually seeing what it does inside your body. So, I mean, I don't know what to tell you guys. I really don't have to say much. You can clearly see it with your own eyes the effects on my blood after drinking coffee with almond creamer, after drinking 12 ounces of Dasani water, and then after drinking 12 ounces of Kangen or hydrogen rich water. You want to keep your cells hydrated, you want to keep them energized, you want to keep them moving to prevent diseases, just to prevent a lot of problems in your health. So I hope you guys like this experiment that I did between these three beverages. If you have any suggestions or what else I should do with my mic. Thank you, Arundhati, for playing that video for all of us. Guys, how many of you really understood what this video was all about? ये वीडियो से हमको क्या समझ में आया? Can we all come on the video? Humble request to all of you. Now, आज का ये जो discussion है ना, when we are about to talk about Inaji Kangen project, ये प्रोजेक्ट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये पानी मुझे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, शुड आई इन्वेस्ट माय लाइफ टाइम फॉर्चून? कुछ लोगों के लिए $5,000, $6,000 can be a lifetime fortune also. We don't disagree to that, we don't dispute on that. But ladies and gentlemen, if you want an answer to this, the whole discussion about drinking water originates with this one demo video, which is very authentic. It is authentic for that gentleman, Sebastian. It is also authentic for you and me. It is authentic for even the strangers. You know why? Because if our body gets exposure to acidic environment, acidic food, acidic air, acidic beverages, you know, even the information, the inputs, the thought process, all the information that is available to us, if it gets acidic exposure, तो आपके बॉडी में जो ब्लड सेल्स है वो क्या होता है? बेसिकली इट विल बिकम क्लम्पी, इट विल गेट क्लम्प टुगेदर, तो वो सेल का मूवमेंट ब्लॉक हो जाता, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग इवन द प्लेक फॉर्मेशन, दैट इज व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कोलेस्ट्रॉल. ये जो वेरियस फैक्टर्स आते हैं ना, इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इन द बॉडी,
It is because of the acidic environment inside the body for a prolonged period of time. And then the question is, our whole health is defined by the pH values. Acidic causes sickness, alkaline causes wellness and well-being. Very simple. And everything that we put inside our mouth, 99% of the time that we consume is all acidic. So throughout the 24 hours that we are alive, we are breathing acidic, we are drinking acidic, we are eating acidic, we are watching acidic. So because of this, we are aging fast from inside. The cellular age or the biological age is depleting faster. That is why we find people all of a sudden collapsing at the gyms or at the workplace or during celebrations. Why this happens? Because of prolonged period of acidic environment inside the body. Now, when you add anything else, आपने देखा tea, coffee, beverages, even the packaged drinking water, it is adding to more acidic environment. And that will lead to increased cholesterol formation, plaque formation. Already अगर आपके cells damaged है और breakdown के कगार पे है, if it is on the border of breaking down, we are triggering those accidents and incidents in our lives. So ladies and gentlemen, under the microscope, you can check your blood cells after drinking Kangen water, 10 minutes after drinking Kangen water, और live blood cell में आपको पता चल जाएगा the water works. Now, if the water works at the cellular level and subcellular level through hydration, causing to remove the clumpiness and bringing apart those cells and engaging in friction in the movement, so that हमारे जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, that we consume as an intake penetrates inside the cellular levels, and when that friction happens, the toxins also come out. So it is a dual process: intake of nutrition and micronutrition, and also throwing out of toxins from the body. So ladies and gentlemen, this is a live test that you can do on your own blood cells. Forget your neighbors, forget the person who came to you. Nothing matters. Like your blood report matters to you, your blood report matters to your doctor for treatment. Similarly, will this water make an impact to your blood cells? You can do a check under the microscope. That is why, and this clearly indicates and defines of all the things that is surrounding our life and lifestyle. Kangen water, live fresh water, 9.5 pH water has the ability of a redox potential. Redox potential matlab ability to scavenge the free radicals that are formed in our bodies due to various reasons. अलग अलग वजह से शरीर में जब टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और वो टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और that turns into an inflammatory response, and that also later on gets converted into basically ulcer, tumor and cancer. अगर timely intervention नहीं हुआ, if these toxins are not flushed out of your body, if these free radicals are not scavenged, and if they are not thrown out of your body, and this is possible by adding intake of antioxidants on a daily basis. So 3 to 5 grams of antioxidant intake on a daily basis automatically will neutralize all the free radical formations in the body. So whatever food that we consume, whatever we do as a physical fitness, compared to all that, hydration with ionized, restructured, naturally alkaline water or Kangen water, that will have a significant influence and impact on your wellness and well-being. So with this, I would hand it over to summarize to Chinnappa bro, and then conclusion by Janakji. Thank you. Yeah, Shashi bro, thank you. Thanks for this. I hope like I'm audible. You can hear me? Yeah, thank you. Thanks a lot. Shashi bro, like just taking it forward, like you have been at the best.
and thanks for that. And I know there's nothing much to speak about you, because whenever you open your mouth, there's always is learning. Okay, thanks for that. And today, this is one of the video what Shashi bro today, it was played, which made me take a decision. And today, when we started the program, Shashi bro was asking about a lot of things, saying whether the investment is worth. And people who have been drinking this have always found its value over the cost. And today we could hear a lot of the testimonies, people, Vinit ji, then Suma Gowda, everybody speaking about as the value over the cost. Until unless you drink it, you experience it, you will definitely not find it. And Vinit ji, you were just mentioning about is you cannot see that money, but at least not walking the steps of the hospital is basically is a boon to us. That is where we can save that money. And again, coming back to is after the session, the video, guys, we have to understand it. It is not a gimmick anymore, and it is not a magic show. This is real. It has been done for the last 50 years, and as the calculation goes, it can go for the next 2000 years also. Okay, my sincere request, because we got to live up to around 120 years. Okay, so I promise to live up to 120 years. I need something very, very good for me and for my family members. Okay, so this is my responsibility to see that I first take care of myself and my family, and at the same time, I am also responsible for the society at large. So today, Shashi bro is doing a wonderful thing. Educating is the system, educating people. And one thing is Shashi bro is doing his whole things, but the other side is it is our responsibility to be present in these sessions on a daily basis. Because once we hear, we are not computers. We have got a very, very short limitation in remembering things. Forget about the capacity what we can observe, but the limitation of remembering things. What we speak today, will be forgetting it tomorrow. So when you start hearing the same things 100 times, that's where you have this Kangen as a practice, as a ritual on a day-to-day basis. So until unless you get it as a ritual, I think Kangen is a wonderful product and a beautiful business to be associated with. Okay. Thank you, Shashi bro. Thank you, team. Thank you, Panacea. I think it's my heartfelt gratitude and blessings to each one of you. Thank you. Thanks a lot, Shashi. Thank you, Chinnappa bro. We'll invite Janak Kachadia, 682-3, equity partner of Enagic. That is what we call this status, this position of leadership, because you become a partner with the company and you become eligible to get a part of the royalty income, bonus income from the company's turnover. Now, like I said, this is a $1 billion company. We are stakeholders. So on this platform right now, if we were to call a real stakeholder and taking a big pie out of the share, that is Janak ji over here. And Janak ji, अपनी जुबानी अपनी कहानी बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या था और केंगन किस तरह से आपने इजीली स्टार्ट किया, कोई तकलीफ ही नहीं थी आपको, you could easily afford it, and how you easily became a 682-3 also. आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे. यस सर, नमस्ते सबको और थैंक यू सो मच शेयरिंग दिया. तो आज का टॉपिक सर ने जो लिया बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि जो वाटर आज के लिए बहुत जरूरी है और जो मशीन हमारा कैंगन मशीन का जो पानी है रियल में मिरेकल है, इसके लिए कोई तुलना नहीं है आज की डेट में. तो जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट जो कॉस्ट है उसके सामने 1000 गुना रिजल्ट है. जो कॉस्ट हम दे रहे हैं, लेकिन वो यूज जो करेंगे उसको लगेगा कि ये फ्री में है, लेकिन जो यूज नहीं करेगा उसको इसका कॉस्ट लगेगा. जिसने इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया है, अनुभव नहीं लिया है, उसके लिए मशीन महंगा है. और जो 3-4 महीने 6 महीने रेगुलर इसको ड्रिंकिंग करते हैं उसके लिए मशीन वरदान साबित होता है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज आने वाले समय में इसकी हर घर पे जरूरत है अगर हेल्दी रहना है तो. क्योंकि आज की डेट में जो हम खाना खा रहे, पानी पी रहे, हवा ले रहे, वो सभी प्रदूषित है. सब पेस्टिसाइड खाना आज की डेट में सब मिलावट वाला हो चुका है और वाटर भी इतना आज पोल्यूटेड हो चुका है जिसमें भी कई सारा केमिकल ऐड हो चुका है.
तो इसके लिए हम अगर चेंज कर सकते हैं तो खाना और पानी दो ही हमारे लिए हाथ में है, तो उसमें हमें जितना भी चेंज करना चाहिए उतना करना चाहिए अगर हेल्दी रहना है तो ये इम्पोर्टेड है। और एनर्जिक जैसा प्लेटफॉर्म अगर हम मेहनत करेंगे तो इनकम की इसमें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कंटिन्यू 1-2 साल 3 साल या 5 साल मेहनत कर लोगे तो आपने जो 50 साल मेहनत करोगे उतना ये 3-4-5 साल में मिल जाएगा, इतना श्योरिटी है। क्योंकि मैं 5 साल से सिस्टम के साथ कंटिन्यू मेहनत करके आज एक लेवल पर हमने एक आईडी हमने पार्टनर तक पहुंचाया है। दूसरा अभी नेक्स्ट हमारा डैश 4 का टारगेट है, विद इन 3-4 महीने में एज ए डैश 4 तक भी एक आईडी चला जाएगा, तो एक आईडी डैश 3 भी चला जाएगा। तो बहुत ही मेहनत थोड़ा स्टार्टिंग में करना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने करोगे बाद में 2-4 महीना रुक जाओगे वापस 6 महीने करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। कंटिन्यू आप 3-4 साल लगातार दे दोगे, बाद में आपको जो भी एक्स्ट्रा करना चाहो करो, लेकिन कैंगन करने के लिए जो भी करना पड़े कर सकते हो, लेकिन कैंगन को मत छोड़ो। कई लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन उसको कैंगन को भी फुल टाइम करो, दूसरा बिजनेस पार्ट टाइम करो। अगर कंटिन्यू आप डेमो करोगे और मेहनत करोगे तो आराम से जितना आप जॉब में या तो कोई दूसरे बिजनेस में अर्निंग ले रहे हो उतना आप 100% कैंगन से ले रहे हैं और मिल ही रहा है। लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसको ये मिल रहा है, जो मेहनत नहीं करेगा उस लेवल को इसका इनकम इतना नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरा जो प्लान है कंपनी का वो एक्टिव प्लान है। आपको कंपनी का आज मालिक जो है 83 ईयर भी आज इतनी उम्र पे भी एक्टिव है, आज की डेट में इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने एक लेवल अचीवमेंट ले लिया तो हम बैठ जाते, 6 ए बन गए, 5 ए बन गए, 4 ए बन गए तो चलो टीम करेगी, तो ऐसे नहीं होगा। कंटिन्यू टीम के साथ चलना पड़ेगा और टीम को साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आराम से कोई भी लेवल आप जो सोच रहे हो वो सभी लेवल अचीवमेंट होगा। थैंक यू सर। जनक जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। जैसे कि इन्होंने बताया, आपको काम तब तक करना पड़ेगा जब तक आपके सेल्स काम कर रहे हैं। आपके सेल्स तब तक काम करेंगे जब तक आप कैंगन वाटर पी रहे हैं, और आप कब तक कैंगन वाटर पिएंगे तब तक आप एनर्जेटिक रहेंगे, और एनर्जेटिक रहेंगे तो आप उसका अच्छा पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना अपने लाइफ को बेहतर बनने के लिए। यही रिकमेंडेशन है आज के लिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेने में हमें हेल्प कर सकता है, next week we are going to bring international speaker on this forum. दिल थाम के बैठिए, be prepared to invite all your prospects, maximize it. They are advisory board members of Inagic Global. मतलब जिन लोगों ने इस इनाजिक कंपनी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, they are top 10 people who are on the advisory board of Inagic who made it into a $1 billion company. And we are going to have a guest speaker who's one of the top Inagic advisory board member. So all the best, be prepared for next week. अपना prospect list बना लीजिए, किसको बुलाना है, किसके लाइफ को चेंज करना है। यहाँ पे आप समोसे चाय लेके बैठ सकते हैं, साथ में कैंगन पानी लेके बैठ सकते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और सेशन अल्कलाइन होगा, आप बहुत अल्कलाइज्ड हो जाएंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट मैम।